Hello and assalamu alaikum guys. Today we're going to be doing O-Level Physics 5054 May June 2022 Paper 2 Variant 1. Before starting मैं आपको आपके एग्जाम की चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ एंड अबाउट आवर टॉपिकल पास पेपर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट योर एग्जाम. आपके एग्जाम के टोटल मार्क्स जो है दे हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 75 टू 80 मार्क्स एंड योर सेक्शन बी इज रिमूव्ड. तो आपके जो 15 मार्क्स के लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस होते थे वो इरेज हो गए हैं टोटली एंड उनको रिप्लेस क्या करेगा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जिनके शॉर्ट आंसर्स हैं. ठीक है ना. ऑल क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड. जैसे आपके सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होते थे ना एंड यू ओनली हैड टू अटेम्प्ट 2. अब वो सिलसिला खत्म हो चुका है. नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. जो आपका स्पेसिमेन पेपर आया था उसमें थे तकरीबन 10 क्वेश्चन and you had to attempt all of them to obtain all the marks. So yeah, having that said, let's move on to the topical passages. हमारे जो टॉपिकल पैसिव्स हैं दे आर जस्ट लाइक द ट्रेडिशनल पैसिव. जैसे आपने रीड एंड राइट के देखे होंगे और आपने डिफरेंट वेरियस कंपनीज के देखे होंगे बट द एज वी हैव ओवर देम इज दैट फॉर एवरी टॉपिक देयर विल बी अ स्पेसिफिक क्यूआर कोड. जैसे ये क्यूआर कोड नहीं है. हर टॉपिक के ना फ्रंट पेज पे जहाँ चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम लिखा होता है वहां एक क्यूआर कोड हम अटैच करेंगे. और अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे व्हाट विल हैपन इज दैट आप एक YouTube के प्लेलिस्ट में चले जाओगे लाइक दिस प्लेलिस्ट. अगर आप रेडियो एक्टिविटी एंड द न्यूक्लियर एटम का चैप्टर में जाओगे और उसके बार कोड या क्यूआर कोड को स्कैन करोगे इट विल लीड यू टू अ प्लेलिस्ट लाइक दिस. और जो जो क्वेश्चंस हैं इन योर पास्ट पेपर्स दे विल बी सॉल्व्ड सिक्वेंशियली इन अ वीडियो फॉर्मेट. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. और अगर आपको खुद आते हैं यू कैन डू इट योरसेल्फ. अगर आपको मुश्किल हो रही है पेपर्स पास पेपर्स अटेम्प्ट करने में यू कैन डू इट विद अस. And if you want to order them, you can order them simply on our Instagram, which is inkscribe1. और ये इसका QR code है. If you scan it, it will lead you to our Instagram. Having that said, let's move on. Figure 1.1 shows a model of a human arm. So ये जो हमारे पास system है that represents a human arm. ये symbolize करे एक human arm को. The rubber band represents the muscle that moves the part of the arm XY up. So this is the muscle. लाइक सपोजिट मसल अगर आपके पास हाथ है हाथ का मसल रिप्रेजेंट कर रहा है ये रबर बैंड. अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम एक्स वाई. एक मास लटका दिया गया एक्स वाई से विच विल क्रिएट अ क्लॉकवाइज मोमेंट. द वेट ऑफ द सेक्शन एक्स वाई इज नेग्लिजिबल एंड द मॉडल इज एट रेस्ट. जो मॉडल है दैट इज एट रेस्ट और ये जो इसका वेट होगा ये जो डंडी है हमारे पास जो डंडी दी हुई है उसका वेट नहीं होगा. और होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. अगर इसका वेट होता तो आपको क्या लगता है क्या होता. इसका वेट होता तो इट विल कंट्रीब्यूट टू द मोमेंट. ठीक है ना. इट विल कंट्रीब्यूट टू द मोमेंट. द क्लॉकवाइज मोमेंट इस तरफ की मोमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा अगर इसका भी मास होता. सो दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस दैट वी डू नॉट हैव टू कंसिडर द मास ऑफ द स्टिक. आगे चलते हैं. A1. State two ways in which the dimension of the rubber band changes as the mass is added to the section XY. So when the sorry, so when the mass is added to the section XY, as we can see the rubber band elongates, it stretches. और जब कोई चीज stretch होती है in the vertical direction, it must shrink from the horizontal direction. क्या कह रहा हूं मैं ये आपसे कि अगर for example you have this rubber band and if you increase the increase the length of the rubber band, the volume will decrease of the rubber band. ठीक है ना. And it is very apparent in this diagram that when you stretch the rubber band, of course the length is increasing but the width or the cross sectional area will decrease. Width slash cross sectional area decrease and what increases क्या. Length will increase. So let's leave that here. Move on. 2. State the form of energy stored in the stretched rubber band that will be elastic
potential energy. So this is a question you have to memorize, right? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर इन अ रबर बैंड। समझ आ गई? आगे चलते हैं हम। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान सा है। अगर आप ईयरली पास पेपर्स कर रहे हैं तो आपको इन माय ओपिनियन पहले सारे फॉर्मूलाज और ऐसी चीजें याद करनी चाहिए दैट इज वेरी ऑब्वियस, और जो रिडंडेंट होती हैं, और जो इन अ फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आती है, ठीक है ना? इन अ फॉर्म ऑफ डेफिनेशन एज इन, अगर आपने दो लाइनें याद करनी है तो वो दो लाइनें याद करके आप ये पैसे करना शुरू करें, ताकि जो सिर्फ दिमाग यूज करने वाले क्वेश्चंस है ना, वो आप साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएं, ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ दें। तो यार यही बेहतर होगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। ये क्या बदतमीजी हुई? फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, for an object in equilibrium, मतलब when an object is in equilibrium, the clockwise moment must be equal to the anti-clockwise moment, or the sum of clockwise moment must be equal to the sum of anti-clockwise moment. So the sum of clockwise moment must be equal to the sum of anti-clockwise moment. So yeah, ये आपने लिख देना, एंड होपफुली यू गेट द बोथ ऑफ द मार्क्स। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो याद करने वाले थे, आपने इनमें कोई स्पेसिफिक दिमाग नहीं लगाया। जैसे आपने इसमें दिमाग लगाया ना, ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट हार्ड, ऑफ कोर्स इट इज वेरी अपेरेंट, बट यू स्टिल हैव टू विजुअलाइज, या आप विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चंस में आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, इन क्वेश्चन में आपको चीजें याद होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग रट्टा मारो, आई एम जस्ट सेइंग सम थिंग्स आर लाइक यू हैव टू रिमेंबर देम। आगे चलते हैं। Explain why the force that the rubber band exerts on the section XY is larger than the weight of the mass. First of all, I have to explain you one thing before going into the question. That one thing is that कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डोर नॉब है, आपके पास एक डोर हैंडल है, और आप अपने घर में भी ये ट्राई कर सकते हैं। और ये कुछ चीजें होती है ना फिजिक्स में, ऐसी होती हैं जो आपको पहले से पता होती हैं, लेकिन आप उन पे इतना गौर नहीं करते, आप अपने आसपास को इतना एग्जामिन नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मैं दो एक ऑप्शन देता हूँ, आपने दोनों ऑप्शन में से बताना है कि किसमें ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा। एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप यहाँ फोर्स अपना अप्लाई करें एफ, और आपके पास एक ऑप्शन ये है, फोर्स सेम रहेगा, फोर्स इज 2 न्यूटन्स ईच, ठीक है ना? व्हाट इज चेंजिंग इज दैट जो हमारा व्हाट यू कॉल इट डिस्टेंस है, दैट इज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग अप, ठीक है ना? तो आपने मुझे बताना है कि किस जगह पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होएगा। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव थॉट कि अगर आप ज्यादा डिस्टेंस वाली जगह पे मोमेंट अप्लाई करोगे, वहां आई मीन फोर्स अप्लाई करोगे, वहां ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होएगा, ठीक है ना? सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप कोने पे जाके ना, बिल्कुल कोने पे जाके अपनी उंगली लगाओगे, दैट विल ओपन द डोर, वाइल आप अगर इधर अपना हाथ रख के पूरा फोर्स लगाओगे, दैट माइट ओपन द डोर, बट इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ फोर्स। व्हाट डज दैट टेल अस? दैट टेल्स अस कि जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है ना, वैसे वैसे आपको फोर्स जो है वो कम अप्लाई करनी होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है, वैसे वैसे आपका जो मोमेंट है दैट इंक्रीजेस। So having that said, they are saying कि explain why the force that the rubber band exerts on the XY is larger than the weight of the mass. Now they're asking for the force, not the moment. The moment is equal. The moment is equal on both sides, the anti-clockwise and the clockwise side. What they're asking about is the force. So the force created by the mass is less than the force of the rubber band. That is because कि जो pivot और rubber band के बीच में distance है, that is much less than the distance between the rubber band, I mean the mass and the pivot. So the force must be larger in order to accommodate for that. तो हम क्या करेंगे? The distance between the
pivot and the rubber, the pivot and the rubber band is much less than the distance between the mass and the pivot. ठीक है ना? Therefore, it will require much more force from the rubber band. Therefore, it will require much more force from the rubber band to बस ये लिख लेते हैं लेकिन आपने अगर लिखना हो तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस यहाँ पे भी लिख सकते हो कि क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है since the distance between the pivot and the rubber band is less than the distance between the mass and the pivot you the rubber band will require more force ठीक है ना so yeah hopefully you understood that आगे चलते हैं the mass suspended from xy in figure 1.2 has a weight of 4 newtons so 4 newtons का यहाँ से mass का weight है ठीक है ना weight है हमारे पास 4 newtons का आगे देख लेते हैं the mass suspended calculate the force that the rubber band exerts on the section xy we have to calculate the force that the rubber band exerts मतलब ये पूछ रहे हैं कि हमारा फोर्स क्या होगा द अपवर्ड फोर्स मतलब द एंटी क्लॉकवाइज फोर्स फ्रॉम द रबर बैंड को कितना फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा सो अब हम क्या करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे द क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट द क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द distance between the pivot and the object or the force जो distance होगा from the pivot and the force वो हम लेंगे और हमने जो force है वो लेंगे तो force हमारे पास कितना है 4 न्यूटन इंटू 18 ठीक है ना और इसके बाद हम इसको लेबल कर लेते हैं F which is a force F इंटू D हमारे पास डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर ठीक है ना हमारे पास डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर्स का और हमारे पास यहाँ बन रहा है पता नहीं यहाँ 72 बन रहा है इस साइड पे 72 टू यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 72/2 विल बी इक्वल टू द आंसर विच इज एफ विच इज 36 न्यूटन्स सो एज आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि the force exerted by the rubber band must be much larger than the force of the mass since the distance is much larger from the pivot to the mass तो yeah आगे देख लेते हैं explain how your answer in B3 is different if the weight of section XY is not negligible. I told you this in the starting of this video that this weight is negligible and this weight is negligible because क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं करना था लेकिन अब उन्होंने बता दिए कि explain your answer अब उन्होंने हमें बता दिया कि अगर इसका वेट होता तो क्या होता इसका वेट होता तो वेट किस जगह पे एक्ट करता वेट विल एक्ट फ्रॉम द सेंटर टू द वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम सेंटर टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स वेट एक्ट करेगा राइट और ये किस तरफ का मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट को राइट सो if we consider the weight of that डंडी जो भी है of x y the clockwise moment will increase so yeah it will contribute to the clockwise moment अच्छा जी हमारा क्वेश्चन 1 हो गया अब आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन 1 हो गया क्वेश्चन 2 this is a relatively easier question this is 8 marks का question है and this is damn easy question like very easy question so let's do this question
फिगर 2.1 shows a wind turbine. हमें एक wind turbine दिया हुआ है, उसकी blades हैं और circular area in which the air passes. The wind blows directly towards the turbine with a speed of 12 meters per second. हमें wind की speed बता दी गई है. In 1 second, 60,000 kilograms of air passes through the circular area swept by the blades. Calculate the kinetic energy of this mass. हमारे पास दो वैल्यूज है. हमारे पास एक है velocity की वैल्यू है और हमारे पास एक है mass की वैल्यू है. And they have asked us for the kinetic energy. So this is a damn easy question if you know the formula. The formula will be 1 by 2 mass into velocity का square. ठीक है ना? That will give us the kinetic energy. तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. 1 by 2 इंटू मास हमारे पास 60,000 है तो 60,000 एज इट इज हम लिख देंगे और उसके बाद इंटू वी स्क्वायर विच विल बी वो 12 का स्क्वायर. ठीक है ना? 12 का स्क्वायर है ये हमारे पास. ये यहाँ जाके हम ये 12 का स्क्वायर कर लेते हैं. तो दिस विल गिव अस 30,000. 12 1 by 2 1 by 2 से 60,000 कट गया तो मेरे पास 30,000 रह गया. 30,000 इंटू 12 का स्क्वायर विच इज 144. This will give us an answer of 4.32 मिलियन जूल्स. जूल्स इसका यूनिट होगा. तो हम ये लिख देंगे बट वी हैव टू पुट इट इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट करना है एंड दैट विल लीव अस विद 4.3 मिलियन जूल्स. सो दैट विल बी द आंसर. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इसलिए क्योंकि हमारे पास जो डेटा गिवन है दैट इज ऑल्सो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन करना हो between the mgh and the 1 by 2 mv square, आपने देखना है कि आपके पास वैल्यूज कौन सी है. ऑफ कोर्स इसके पास वैल्यू है स्पीड की वैल्यू और मास की वैल्यू और you shouldn't even bat an eye on what you have to do. You have to calculate the kinetic energy. B. A wind turbine releases no carbon dioxide into the atmosphere while generating electricity. Compared with a coal power fired power station, this is an advantage of using a wind turbine. Wind turbine जो होता है, it is a renewable source of energy while the coal is a non-renewable source of energy and the coal reduces a ton of carbon dioxide into the air. Right? इसलिए आपको आजकल लगा हुआ है नारा कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें. जैसे सोलर हो गया, विंड पावर्ड हो गया, जियोथर्मल हो गया, इन पे स्विच करें ना कि हम फॉसिल फ्यूल्स रह गए या हम कोल पावर्ड वगैरह चीजों पे रहें. State one reason why it is important to reduce the amount of carbon dioxide produced. It is necessary for us to reduce the amount of carbon dioxide we use because हमें ये carbon dioxide का intake कम करना चाहिए because of the global warming and the rising sea levels. We should reduce the amount of CO2 consumed because of the damages it does, like global warming and the rising of sea levels. ठीक है ना? ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग ऑफ सी लेवल्स. सो या आगे चलते हैं. Suggest one advantage of using a coal-fired power station compared with a wind turbine. अच्छा तो बेसिकली जो आपका कोल फायर पावर स्टेशन होगा ना that will like produce a consistent amount of energy per hour. मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक पावर स्टेशन बनाया है that is designed to produce like x amount of energy per hour. ठीक है ना? that will that can be controlled because आपका जो coal fired power station है that will work continuously and there are no factors which can hinder the amount of energy produced. आपका जो coal fired power station होगा ये चलता रहेगा until you want it to stop. While on the other hand जो हमारे पास wind turbine होते हैं, wind turbine जो होती है that is solely dependent on one thing. It is dependent on one thing which is the air. एयर पे डिपेंडेंट होती है ना विंड टर्बाइन के द अमाउंट ऑफ एयर दैट passes थ्रू द विंड टर्बाइन. जितनी एयर पास करेगी विंड टर्बाइन से उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जो एयर है दैट शुड बी कमिंग कंसिस्टेंटली. राइट? जो एयर होती है आपको पता होगा कि अगर आप कभी बाहर चले जाओ
बाहर चले जाओ तो कभी हवा चल रही होती, कभी हवा नहीं चल रही होती. So that is one thing, that the amount of energy produced by the wind turbine is dependent on something, and the dependent thing is the air. And अगर air ना आ रही हो, हमारे पास हवा ना आ रही हो, what will happen is that उसकी production of energy भी खत्म हो जाएगी, है ना. So if there is no air, the wind turbine won't work. ये भी लिख सकते हैं नॉन रिलायबल. ये तो मैंने अभी टूटी मोटी इंग्लिश में लिखा है, नॉन रिलायबल. रिलायबल. अच्छा जी. एक और भी लिख सकते हैं कि जो विंड टर्बाइन्स होते हैं, दे रिक्वायर ट्रमेंडस अमाउंट्स ऑफ जगह, स्पेस. अगर आपने किसी वीडियो या आपने रियल लाइफ में विंड टर्बाइन देखा हो, इट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस. बहुत ज्यादा जगह लेता है एंड इट इज वेरी ह्यूज. ठीक है ना, इट इज ह्यूज. तो या रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस. ठीक है ना, तो ये भी हम लिख सकते हैं. A coal-fired power station releases 0.96 kilograms of carbon dioxide when it generates 1 kilowatt hour of electrical energy. So whenever it creates 1 kilowatt hour of electrical energy, ये हवा में रिलीज करेगा 0.96 kilograms of carbon dioxide. Define kilowatt hour. Kilowatt hour पूछ रहे हैं क्या होता है? It is the amount of energy, मतलब 1 kilowatt hour used for 1 hour. 1 kilowatt used for 1 hour. 1 kilowatt used for 1 hour. ये लिख देते हैं सीधा सीधा. तो दैट इज नॉट अ हार्ड थिंग, बस एक लाइन का आंसर है. आगे देख लेते हैं. Calculate the mass of carbon dioxide saved when the wind turbine has a power output of 2000 kilowatts and operates for 12 hours. So basically what they have previously said is that whenever the coal-fired power station produces 1 kilowatt hour of energy, जब भी 1 kilowatt hour of energy produce होती है by the coal power fired station, वो 0.96 kilograms of what do you call it, carbon dioxide will be released into the air. तो हमने निकालना है कि when the wind turbine produces this much amount of energy, how much kilograms of carbon dioxide is released into the air. First of all, step one will be to calculate the amount of energy produced by the टर्बाइन. पहले आप टर्बाइन से निकाल लो कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है टर्बाइन से, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. तो हमें एक पावर का फॉर्मूला पता था, राइट. इसको आप निकाल देंगे दिमाग से, इसको निकाल दें. पहले पावर का हमें एक फॉर्मूला पता था, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. पावर हमारे पास कितनी है, 2000, इज इक्वल्स टू एनर्जी, और टाइम हमारे पास है 12 आवर्स. हम इनको यूनिट्स को आवर्स और किलोवाट ही रख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 24,000 किलोवाट आवर्स. ठीक है ना, इज इक्वल टू द एनर्जी. तो हमारे पास 24,000 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है ना. तो अब हमें उन्होंने बताया है कि 0.96 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड पर किलोवाट आवर. तो हमारे पास 24,000 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है ना. तो अब हमने देखना है स्टेप टू डिटरमिन हाउ मच द mass of CO2 is relative to how much energy is produced. तो अगर हम कोल फायर्ड पावर स्टेशन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते, तो हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होती, वो हमें कैसे पता चलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस पावर वैल्यू ऑफ एनर्जी, राइट. 24,000 हमारे पास वैल्यू है एनर्जी की, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 0.96, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ मास
that mass of CO2 which is going to be produced when we create like 24,000 kilowatt hours of energy. तो ये मैंने अभी इतना ज्यादा लिख लिया, एक मार्क का क्वेश्चन है, फिर भी इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड देन टू डू लाइक वैसे वैसे देख देख के कर लो. Wind is a form of renewable energy. State the name of one other form of renewable energy. One other form of renewable energy will be solar. जो सोलर है ना उसका भी यही मसला होता है, सोलर का भी यही मसला होता है, रिलायबल नहीं होती है. ठीक है ना, कभी धूप निकली होती है, कभी धूप नहीं निकली होती है. एंड मतलब कभी बादल आए होते हैं, रात को 12 घंटे नहीं चल सकती. राइट. सो द डिपेंडिंग फैक्टर इज द नॉन रिलायबिलिटी ऑफ द नॉन आई मीन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोलर हो गया, सोलर हो गया, सोलर की जगह हमारे पास हो गया जियोथर्मल हो गया, जियोथर्मल हो गया. और उसके बाद ये टरबाइन्स हो गए हमारे पास, टरबाइन्स, विंड टरबाइन्स. वो को मैंने बोल दिया कि विंड नहीं करना, तो हाइड्रो हो गया हमारे पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक. ये भी हो सकता है हमारे पास. सो या देयर आर मेनी. सो यू रिमेंबर लाइक एनी 3 4 of them. You don't have to remember all of them. Actually, it's better if you do. आगे क्वेश्चन 3. So a short advertisement के जो हमारे topical past papers हैं, those are out. You can buy them on our Insta, which is ink scribe one. अगर आप इसको देखें डिस्क्रिप्शन में भी होगा. You can buy them there. Make sure to follow us. You can buy topical yearly and our notes as well. Notes अगर आप 5,000 से above की परचेज करें, you'll get the notes for free. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारे टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं ना, वो हमने खुद कंपाइल किए हैं. और जैसे हमने कंपाइल किए ना, हमने उनके ऊपर हर स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, हर स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर. मतलब ये जैसे एक क्वेश्चन है ना, इन अ टॉपिकल वर्जन वर्क पावर एंड एनर्जी पे हमारे पास तकरीबन 20 क्वेश्चंस हैं टॉपिकल में. एंड वी कैन सॉल्व देम इन अ टॉपिकल मैनर. हर क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनी होगी, एक स्पेसिफाइड वीडियो बनी होगी, विच यू कैन go watch and attempt to get your like आप अपना जो topic है, you can confirm that and you can solidify that. So yeah, that is going to be it. Let's continue. Question number 3. Define latent heat of fusion. अच्छा, अब हमने define करना है latent heat of fusion. It will be the amount of thermal energy required to change the state of a substance from solid to liquid. तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आइस क्यूब है और आपने उसको मेल्ट करना है फ्रॉम सॉलिड और फ्रॉम आइस टू लिक्विड और टू वाटर. आपके पास एक आइस क्यूब है, आपने उसको सॉलिड से लिक्विड मतलब वाटर में कन्वर्ट करना है. तो आपको उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो उसको हम लिख लेते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स के इट विल बी द amount of energy required amount of energy required to do what, to to change the state of a substance from solid to liquid. So yeah, easy as that. इसको आप बड़ा बड़ा करके लिख लेना, ज्यादा 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 लगे. 2 मार्क्स दे. आगे चलते हैं. अच्छा आगे, a sample of metal P at 100 degrees Celsius is heated steadily until its temperature reaches 400 degrees Celsius. So first of all, let's like data की sheet बना लेते हैं. The temp we start with, it will be the temperature we start with. It will be 100 degrees Celsius. हम इधर से start करेंगे. The melting point is 250 degrees centigrade. The melting point of the metal is 250 degrees centigrade. Sketch a graph to show how the. अच्छा, अब हमारे पास a bunch of हमारे पास information है. तो last value of temperature 400 आ गया हमारे पास. 400 तक हम जाएंगे, यहां तक जाएंगे हम. हमने जाना है यहां तक, टाइम के आखिर तक, और टेम्परेचर
400 डिग्री सेल्सियस तक, or the melting point is gonna be 250 degrees Celsius. So what are we gonna do? We're gonna start till we reach 250 degrees Celsius. 250 degrees Celsius पे क्या हो रहा है? As they have mentioned कि the melting point is 250 degrees Celsius. So what will happen to the 200 when it reaches 250 degrees Celsius? The line will be flat. The line will be flat because whenever there is a state change, the line goes flat. ठीक है ना? तो हम ये यहां तक बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, लाइन गोज फ्लैट, और फिर ये आगे जाएगा टू रीच 400 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ ये लाइन फ्लैट क्यों हुई है, ठीक है ना? स्टार्टिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस जो स्ट्रेट लाइन बनती है ना, एट 250 डिग्री सेल्सियस, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्टेट एंड बिकॉज ऑल ऑफ द एनर्जी इज एलोकेटेड टुवर्ड्स द चेंज इन स्टेट। जब आपकी एक स्टेट चेंज हो रही होती है, सारी एनर्जी जो जा रही होती है वो जा रही होती है उसकी स्टेट चेंज करने में, ना कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सॉलिड होते हैं ना उनके अंदर इनिशियली बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है। सो व्हेन दे आर हीटेड अप, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे वाइब्रेट, एंड द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, दोज आर ब्रोकन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लिक्विड, ठीक है ना? तो या, तो जब भी आप ये कर रहे हो, आपने ये याद रखना है, जब भी एक स्टेट चेंज हो रही हो, देर इज अ स्ट्रेट लाइन from the start of the state change till the end of the state change, and the final value will be 400 degrees Celsius, since they have told us that it is 400 degrees Celsius, so we don't have to worry about that. आगे देख लेते हैं, let's make it a bit linear. इतना कोई मतलब रफ एस्टिमेट ही बनाना होता है, आपने कोई वैल्यूज तो नहीं लिखी हुई ना, टाइम की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ना इधर दी हुई है, तो या इट्स नॉट दैट, you don't have to be that precise. आगे देख लेते हैं, सैंपल ऑफ अ डिफरेंट मेटल क्यू हैज अ ग्रेटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देन द सैंपल पी। सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज हैविंग अ greater latent heat of fusion mean? That means के the amount of energy required for the state change will be more. For example, अगर आपके पास वही सेम आइस क्यूब था और इस आइस क्यूब को मेल्ट करने में 150 joules of energy लगी है, राइट? दैट विल बी द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट अगर एक और सब्सटेंस है और उसको उसको चेंज करने में 200 जूल्स ऑफ एनर्जी लगी है, दैट विल हैव अ ग्रेटेड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना? So you have to keep that in mind कि whenever the examiner mentions the greater latent heat of fusion, it is usually related towards the substance requiring a larger amount of energy in order to change the states. P and Q are metals with the same melting points. They have the same melting points. मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे ही चेंज होगा ये भी. And the samples have the same heat capacity. Samples have the same heat capacity. The experiment is repeated with the sample PQ. This sample is supplied with the same amount of energy. एक कांस्टेंट एनर्जी वो हो रही है, सप्लाई हो रही है, एंड क्यू को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है पर सेकंड एज इट इज सप्लाइड टू द सैंपल ऑफ पी। एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम फॉर क्यू डिफर्स फ्रॉम द ग्राफ इन बी वन। अच्छा, अगर आपको एक सेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है ना, और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज द सेम 250 डिग्री सेल्सियस, so what will happen is that the line will be much larger. The straight line will be much larger because it will take more time for the state change to occur. So line जो होगी वो larger हो जाएगी, longer हो जाएगी, because it will require much more time
for the state change to occur. जो latent heat of fusion होती है, it is the amount of energy that is required for the sample to change states. And when the energy is kept constant, और जो time है, that will increase. The time period will increase, making the flat line longer. तो हम क्या लिखेंगे? The latent heat of energy, latent heat of energy is the amount, latent heat of, sorry, fusion is the amount of energy required for the changing of states. ठीक है ना? So, when the energy is kept constant, the time period will increase, making the flat line longer. So yeah, I hope you get that. अगर आपको नहीं समझ आई, you should be like eager to ask me in the comment section because it benefits me and it benefits you. So I will not have any problem like messaging you back or explaining it to you. So yeah, आगे चलते हैं. 4. Two parallel rays of light, one red and one blue, enter a glass prism. Figure 4.1 shows both rays of light before they enter the prism. The blue ray is also shown incident on the different side of the prism after passing through the prism. The ray of blue light strikes the left side of the prism at an angle equal to its critical angle. So first of all, they have told us the blue ray is shown incident on the different side of the prism and that angle of incidence is equal to the critical angle. So I is equals to C. That might give us a bit of a clue on what we further have to do. 1. On figure 4.1, mark and label the angle of incident I and the angle of refraction R for the blue light as it enters the prism. So we have to determine what the angle of incidence is and what the angle of refraction is. Of course, we don't have to like find out what the value of the angle is. We just have to determine where the angle will be formed. ठीक है ना? तो आपको I'll tell you, मैं आपको एक easier way बता देता हूँ to remember it. ठीक है ना? The angle formed between, कहाँ से कहाँ तक होगा ये angle? It will be between the normal and the incident ray. So that will give us the angle of incidence. तो हमारे पास normal क्या है? This is our normal which is perpendicular to the surface and this is our angle, this is our incident ray. So इधर से इधर तक हमारा होगा incident, angle of incident. And the same goes for angle of refraction. अगर हम refracted ray से यहाँ normal तक ले लें, that will be our angle of refraction. So yeah, that will give us 1 mark. On figure 4.1, continue the path of blue light after it strikes the left side of the prism. And after it strikes the left side of the prism, where will the blue light go? So, as I have told you earlier, that this might give us a clue on what might happen next. So, I'll tell you what happens next. Since the angle of incidence is equal to the critical angle, जब भी angle of incidence and critical angle are the same, what happens is that the refracted ray will be 90 degrees to the normal. मतलब refracted ray होगी 90 degrees to the normal और यहाँ जाएगी refracted ray. अच्छा मैं आपको लिख दे देता हूँ. Since the I is equals to C, the refracted ray will be equal to 90 degrees to the normal. ठीक है ना? So I'll tell you how it goes.
यहां से आ रही थी हमारी ब्लू लाइट, एंड कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे? इट विल बी कंप्लीटली 90 डिग्रीज टू द नॉर्मल, मतलब यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड दैट इज ओनली व्हेन critical angle is formed on the angle of incidence. So I'll give you a bit of an example. इधर थोड़ी सी जगह है तो हम यही बना लेते हैं. So consider this is a water body and consider that ऊपर वाली जो जगह है that is air. First of all, in order to make an example, what we have to do is create a normal, and the normal will always be perpendicular to the body. ठीक है ना? ये हमने नॉर्मल बना लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये रे बना रहा हूं मैं आपके लिए वैसी फॉर एग्जाम्पल, एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम. जब भी एक रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा, इट विल बी going away from the normal, as we can see here. It is going from the denser medium to the rarer medium. Therefore, it is going away from the norm. तो ये आपको मैंने बता दिए. यहां से एक रे जा रही है, it goes there. So as we know, this is the angle of incidence and this is the angle of refraction. ठीक है ना? तो अगर आप इसको increase करोगे, what will happen is that this will go down, this will decrease. As the angle of incidence is increased, the angle of refraction will decrease, going to a point where there is no angle being formed for the angle of refraction, and the angle of incidence is so high कि आपका जो angle of refraction है that becomes 90 degrees. It becomes 90 degrees to the normal, और ये बन जाएगा क्रिटिकल एंगल. जब आपका एंगल इज इंक्रीज टू अ पॉइंट वेयर द refracted ray is 90 degrees to the normal, then the angle which is formed is the critical angle. So yeah, that is exactly what is happening here. So yeah, let's see आगे. आगे चलते हैं. The refractive index of glass for red light is smaller than the refractive index for blue light. Refractive, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या डिटरमिन करता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स determines how much the ray will bend. ठीक है ना? The refractive index determines how much the ray will bend. So since they have told us the refractive index for of glass for red light is smaller, मतलब ब्लू का ज्यादा है, ब्लू इज मोर देन रेड, मतलब blue will bend more than red. On figure 4.1, draw the path of the red light as it travels in the prism and after it strikes the left side of the prism. Acha, first of all, they have told us that the refractive index is smaller for red than for blue. That means जो red light होगी that will bend less than the blue light. तो इनिशियली आपका यहां जा रहा था, since it is gonna bend आपका यहां चला जाएगा. So you cannot make it parallel. If you make them parallel, then that will show that they have similar refractive indexes. You have to make it less. You have to make it refract less. ठीक है ना? And after that, we form a normal. हम एक normal बना लेते हैं. And after that, what will happen is, जब ये denser medium से rarer medium में जाएगा, it will go away from the normal. And when it goes away from the normal, it will still not refract as much. ठीक है ना? तो हम इसको यहाँ कहीं बना देते हैं. So yeah. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया है. तो या आई थिंक वी शुड मूव ऑन. आई थिंक इनफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन. और इसके 2 मार्क्स मिल गए हैं माशाल्लाह. तो हमें 4 मार्क्स मिल चुके हैं. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द क्रिटिकल एंगल. द क्रिटिकल एंगल, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था? व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल?
This is when the critical angle is formed. When the angle of incidence is equal to the critical angle, what happens is that the refracted ray is equal to 90 degrees. So hopefully you understood that. आगे मैं आपको ये इसकी लिख के भी दिखा देता हूँ इन वर्डिंग्स क्या आपको मैं कैसे लिखना है critical angle is is when critical angle is when the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degrees. Critical angle is critical angle is the angle for which the angle the sorry मैं गलत लिख दिया critical angle is the angle for which the refracted angle is 90 degrees. Well, for which the refracted angle is 90 degrees. Critical angle is the angle for which the refracted angle is 90 degrees. I'm so sorry for that. I was like confused a bit. So yeah, sorry for that. आगे चलते हैं. This was for purely like explanation से आपको मैं दिखा रहा था. चलो, this is a fairly easier question. The refractive index for of glass for blue light is 1.5. Calculate the critical angle C for blue light in glass show you working. तो हमारे पास critical angle का फॉर्मूला क्या होता है? It is sin C is equal to 1 by n. ठीक है ना? हमारे पास sin C क्या है? हमने एंगल निकालना है तो साइन सी हम एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 1/n. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज 1.5. तो 1/5 1/1.5 will give us the answer. हाँ, आप इसको अपने कैलकुलेटर्स पे भी कर लेंगे. अपने कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ. तो 1/1.5 will give us 0.666. तो साइन सी इज इक्वल टू 0.666 which is 2/3. तो अगर हम साइन सी को हटाना हो, व्हाट विल वी डू विद द साइन सी? वी विल टेक इट टू द अदर साइड एंड ऐसे हमारा साइन हो जाएगा इनवर्स. तो साइन इनवर्स 2/3 विल गिव अस द आंसर. तो अब आप कर लें अपने कैलकुलेटर्स में साइन 2/3 which give us approximately 42 degrees. So C will be equal to 42. Question number 5. Figure 5.1 shows a simple DC motor used in a toy car. So they have given us a figure of a simple DC motor और यहाँ हमें पूछा गया है कि this part and this part, what are they called? आगे पढ़ लेते हैं. Terminal A and B are connected to a battery and the motor rotates. On figure 5.1, add labels inside the boxes to identify the part of the motor indicated. तो आपने बताना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो उन्होंने पूछे हैं और उनको हमने लेबल करना है. तो फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स अ कार्बन ब्रश. Carbon brush. This is an awfully easy question. You just need to know a little bit about the chapter. आगे अगले वाला क्या होगा? इट इज अ स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर. ठीक है ना? अ स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर. ठीक है ना? So yeah, let's go ahead and do part B. State what happens to the rotation of the coil when the number of turns on the coil is increased. Whenever the number of coils on the number of turns on the coil is increased, what happens is the
Greater effect of turning. There will be a greater effect of turning. So we can write there will be a greater effect of turning. So yeah, the magnetic field between the poles of the magnet is reversed. So ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा. So what that will do is that the rotation will reverse if that has happened. The rotation will be reversed. ठीक है ना? So yeah, आगे चलते हैं. Now here comes the interesting part. C. The power supply to the motor is switched on and off for a steady rate. So हमें ये नजर आ रहा है कि it is switched on when it accelerates and then reaches a constant velocity, and then it is switched on when it decelerates and reaches a minimal velocity. तो यहाँ वो स्विच ऑन होगा, इस साइड पे ऑन हुआ है और इस साइड पे ऑफ हो रहा है. ठीक है ना? तो अब हमने डिटरमिन करना है कि द मोशन ऑफ द कार, हाउ डज द कार रिएक्ट्स टू द on and off of a power supply. Figure 5.2 shows the speed of the car varies with time, result of power supply being switched on and off. First of all, what will happen is the car is gonna speed up. The the car is speeding up when power supply on and slowing down when off. ये हम एक लिख सकते हैं, है ना? बिकॉज आप देख रहे हैं जब पावर सप्लाई ऑन होता है, इट reaches a terminal velocity, speeds up and reaches a terminal velocity, and then the power supply is turned off and then it decelerates and reaches the minimal velocity. And you might like determine like think of one more thing, that the car is never reaching a value of zero for the speed. जो गाड़ी है उसके पास एक मिनिमल वेलोसिटी है and it is not reaching the value of zero. So the car is never at rest. The car is never at rest. ठीक है ना? और हम ये भी लिख सकते हैं द कार रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. द कार रीचेस maximum amount of velocity for a short period of time. ये भी हम लिख सकते हैं. तो yeah, I think that is enough for 2 marks. आगे देख लेते हैं. The voltage supplied to the motor is switched on for a longer period of time and off for a longer period of time at a steady rate. Suggest what happens to the motion of the car. So they have told us कि जो power supply that has been turned off for on for a longer amount of time and switched off for a longer amount of time. So the speed time graph must look like this. So ये हमारा increase हो रहा है और this will reach a terminal velocity and the terminal velocity will be there for a longer amount of time. और उसके बाद क्या होगा? It is switched off for a longer amount of period of time. तो हम ऐसे जाएंगे, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है एंड देन द पावर सप्लाई इट माइट बी टर्न्ड ऑन एंड हम फिर से ऊपर जाएंगे और इट विल रीच अ टर्मिनल वेलोसिटी अगेन. सो क्या हमें नजर आ रहा है कि व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑन एंड ऑफ फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, द टर्मिनल वेलोसिटी विल रीच अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जो कार रीच करेगी दैट विल बी फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम. लेकिन जो डिसेलरेशन होगी ना गाड़ी की, that might take the car to a state of rest. ठीक है ना? So when the car when the power supply is switched on for a longer period of time, the car will remain in terminal velocity slash constant velocity
for a longer period of time. आप ये भी लिख सकते हैं that the car will decelerate more and might come to a rest. तो आपको क्या नजर आ रहा है? The car will remain in constant speed slash terminal velocity for a longer amount of time, and the car will decelerate more to a point where it might come to rest. So yeah. Question 6. A light dependent resistor LDR is used to sense the amount of light in a room. Figure 6.1 shows part of the circuit used. The LDR is not shown, so I think we have to make the LDR across PQ. Complete figure 6.1 by drawing the symbol for an LDR between points PQ. So let's make the LDR. Oh yeah, 1 second. Sorry for that. 1 second बस. Yeah, अब हम बना लेते हैं एक सिस्टर की शक्ल का rectangle, and now we're gonna make two. ये क्या बदतमीजी है इससे? We're gonna make two arrows. ठीक है ना? So that is gonna be the LDR. आगे, explain how the voltmeter reading changes as the amount of light falling on the LDR increases. When the light falling on LDR increases, the resistance across the LDR will decrease. So the PD across LDR will decrease, and the PD across the fixed resistor. Explain how the voltmeter is changing as the amount of PD across the voltmeter increases. So yeah, that is very simple. That if you decrease the amount of resistance, right, across the LDR decrease, the voltage that was previously be given to the LDR will be given to the वोल्टमीटर की जो मतलब अक्रॉस द फिक्स रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस है ना दैट इज लाइक भूख एंड जो हमारे पास वोल्टेज है ना दैट इज लाइक एनर्जी खाना हमारे पास है जो वोल्टेज है दैट इज लाइक फूड एंड द रेजिस्टेंस इज लाइक भूख ठीक है ना तो जितना आपको चाहिए होगा आप उतना खाओगे बाकी आप दूसरे को दे दोगे लेकिन अगर आपने खाना ही कम खाना है तो बाकी तो जितना भी होगा वो दूसरे को मिल जाएगा प्रोपोर्शनेटली तो या दैट इज हाउ इट इज Figure 6.2 shows part of a circuit containing three resistors. The current in the 4 ohm resistor is 2.4 amperes. Show that the current in the 5 ohm resistor is 1.9 amperes. So first of all, let's calculate the total current in the three resistors. अच्छा तो या ठीक है ना अब हम निकाल लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं हम लोग ठीक है ना बिकॉज जो वोल्टेज यहाँ जा रही होगी वही वोल्टेज यहाँ जा रही होगी एंड इफ वी कैलकुलेट द वोल्टेज वी कैन कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू हियर आई रिपीट इट वंस अगेन जो वोल्टेज वी यहाँ से आएगी ना जितनी यहाँ जाएगी ना उतनी ही यहाँ भी जाएगी तो या दैट इज द कांस्टेंट फैक्टर तो हम पहले वोल्टेज निकालते हैं V इज इक्वल टू आई आर से हम वोल्टेज निकालेंगे V हमारे पास एज इट इज रहेगा I हमारे पास 2.4 इंटू R हमारे पास होगा 4 तो 4 x 2.4 विल गिव अस
9.6, तो यहां से 9.6 जा रही है वोल्टेज, तो यहां से कितनी जाएगी 9.6। नाउ वी हैव 9.6 एज द वोल्टेज, और हम यहां से जो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू, वी कैन इजीली कैलकुलेट द करंट। वोल्टेज 9.6 है, इज इक्वल टू आई हमारे पास निकालने वाला है, और हमारे पास आर कितना है 5। तो 9.6 divided by 5 is equal to 1.92, and 1.92 is the appropriate answer। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, that will be 1.9। To calculate the potential difference across the points x, y, तो हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x एंड y, जो दो पॉइंट्स है। तो बेसिकली फॉर दैट वी विल नीड द टोटल करंट एंड द टोटल resistance. The total resistance will be calculated using adding up the series resistance and the parallel resistance. Parallel configuration की resistance हम अलग निकालेंगे और उसको series में add कर देंगे। तो पहले हमें parallel configuration की resistance निकालनी है, that will be 1 by R1 plus 1 by R2 is equals to 1 by R total। तो 1 by R1 क्या है हमारे पास, R1 4 होगा, प्लस R2 हमारे पास 5 होगा, is equals to 1 by R total। 1 by 4 plus 1 by 5 will be equal to 0.45। तो हम 0.45 को लिख देंगे as it is equals to 1 by R total। तो R total जो है that will go up, और 0.45 नीचे आ जाएगा, तो 1 divided by 0.45 will give us the answer which is 2.222। 2.222 यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस होगी, और अगर हम ये वाली रेजिस्टेंस ऐड कर दें, वी विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई। तो 2.22222 प्लस 6 will give us the total resistance which is 8.2222 ohms। अच्छा, अगर हमें टोटल करंट निकालना हो, टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे? टोटल करंट हमें पता चल जाता है बाय अ सिंपल रूल के जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसमें जो करंट होता है दैट डिवाइड्स। तो यहाँ 2.4 है, यहाँ 1.92 है, तो यहाँ कितना करंट होना चाहिए कि डिवाइड होके यहाँ 2.4 चला जाए और यहाँ 1.92 हो जाए, दैट विल बी द सम ऑफ बोथ ऑफ द करंट्स। अगर हम 2.4, एक सेकेंड, 2.4 प्लस 1.92 करें, दैट विल बी द करंट विच विल बी पासिंग थ्रू हियर। यहां से 4.32 एम्पियर का करंट आ रहा है विच इज गोइंग इनटू टू डिफरेंट स्ट्रीम्स। मतलब आप यही अंदाजा लगा लें कि अगर ये एक पानी की रिवर जा रहा है एंड दैट रिवर डिवाइड्स इनटू टू सेपरेट लेन्स, दैट इज लाइक द करंट। ठीक है ना, थोड़ा सा यहां चला जाएगा और थोड़ा सा यहां चला जाएगा। समझ आ गई? तो हमारे पास टोटल करंट जो आ जाता है दैट इज गोना बी 4.32 एम्पेयर्स। अब हमने इजीली इसको निकाल लेना है, टोटल वोल्टेज निकाल लेनी है हमने। टोटल वोल्टेज विल बी V इज इक्वल टू आई आर। आई हमारे पास है 4.32 इंटू आर हमारे पास है 8.222। तो 4.32 इंटू 8.22222 will give us 35.51, which will be 36। You can round that off to 36 volts will be the answer। 7. Figure 7.1 shows a toy helicopter. It can hover and travel through the air. A student flies the toy helicopter on a journey from A to B to C to D. तो यहां से स्टूडेंट का हेलीकॉप्टर गया, टू बी गया, ए से बी गया, फिर सी गया, फिर डी गया। Figure 7.2 is a scale drawing of the path of the helicopter viewed from above. Determine the total distance traveled by the helicopter. The total distance of the helicopter will be the complete length of paths between 2 points. Between 2 points, all the lengths will be added up and that will be our distance। मतलब A से B तक की distance हम लेंगे, B से C तक का, C से D तक का, and we will all sum it up। हम इसको add कर देंगे and that will be our total distance। तो 10 plus 35 plus
40. So that will be our total distance. The helicopter, ये आपको मैं बाद में करवाता हूँ. The toy helicopter makes the journey in 40 seconds. Calculate its average speed during the journey. The average speed will be calculated using the formula speed is equals to total distance divided by total time. ठीक है ना? तो एवरेज स्पीड की बात करें हम, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 85 आ जाता है और टोटल टाइम हमारे पास आ जाता है 40 सेकंड्स. सो दैट विल गिव अस एन आंसर ऑफ 2.125 मीटर्स पर सेकंड. हमारे पास 3 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए. So, अच्छा, P1 state the difference between displacement and distance. अच्छा, तो बेसिकली इफ यू कंसिडर A your home, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है मैंने. If you consider A your home and B your school, what will be what will you think of your distance? तो अगर आप जाओगे, अपने घर से निकलते हो, अपने घर से एक रोड लेते हो, रोड से आप इधर उधर जाते जाते खज्जल खवार होके आप स्कूल पे पहुंच जाते हो. दैट विल बी आवर डिस्टेंस. ठीक है ना? आवर डिस्प्लेसमेंट विल बी द स्ट्रेट पॉइंट फ्रॉम ए टू बी. इट विल बी द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम आवर होम टू आवर स्कूल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है जो आपको हवा से चीर के लेके जाएगा आपके स्कूल तक इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट. बट आपके पास एक खक्कड़ गाड़ी है जो आपको इधर उधर खवार करके स्कूल पहुंचाएगी. दैट विल बी आर डिस्टेंस. ठीक है ना? वी आर रोड. So yeah, that is the main difference between distance and displacement. And what we formally have to write, like for our exam or our past paper question, is that displacement is a vector while distance is a scalar quantity. So yeah, 4 marks हो गए. Determine the scale used to construct 7.2 and complete the sentence. 1 centimeter on the diagram represents dash on the path. तो 1 centimeter on the diagram represents dash on the path. आपने पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेना है, यहां से यहां तक की मेजरमेंट यूजिंग योर स्केल आपने निकाल लेनी है. ठीक है ना? आपकी जो भी वैल्यू आए, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू आ जाती है 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर का आपने क्या करना है? आपने करना क्या है? आपने 40 meters divided by 6 centimeters कर देना है. And that will give us our what do you call it, representation on the path according to the scale. अच्छा, according to this should be 8 centimeters. ठीक है ना? So this is 8 centimeters. हमारे पास ये आ गया 5. तो 1 centimeter on the diagram will represent 5 meters. तो या दैट्स द सिंपल आंसर. आपने अपना स्केल यूज करना है. Using figure 7.2, determine the size of the displacement of point B from point A. Show your working. So they are asking for us to show the displacement. What will the displacement be from A to D? That will be the clear-cut straight directions and straight line between A and D. That will be our displacement. ठीक है ना? This is our distance and this will be our displacement. So yeah, how do we calculate that? We will calculate that using the Pythagoras theorem. या आप ये भी कर सकते हो ना, like you don't have to use the Pythagoras theorem. Actually what you do need to do is that आप A से D तक का रूलर से अपनी रीडिंग निकालो. A से D तक की रूलर अपना इसके ऊपर प्लेस करो और रीडिंग निकालो, डायगोनल रीडिंग निकालो. That will be approximately 9.2 centimeters. And since we know that 1 centimeter represents 5 meters, so we'll multiply 9.2 by 5 and we'll get a reading of 46 meters.
and 46 meters will be the distance from A to D. You can confirm this using the Pythagoras theorem, which states that hypotenuse square is equals to opposite square. मतलब opposite हमारा हो जाएगा 30 स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक 30 होता है ना, क्योंकि 10 माइनस कर देंगे 40 में से. तो 30 स्क्वायर इज 900 प्लस 35 square. I don't know what 35 square is. So yeah, that gives us a value of 46.1. Height is equals to 46.1. अगर 46.1 को हम round off करें, that will be 46 meters. So yeah, that again states our answer to be correct. Determine the angle between north and the direction of the displacement of point D from point A. From point A हमने निकालना है उसका angle. So what they're talking about is this angle. So what you have to do is place your protractor on this triangle and get the appropriate readings. The appropriate readings will be 39 to 42. You can confirm this again by using trigonometry, basic trigonometry, which is so का टोआ. ठीक है ना? हमारे पास so sin x is equals to opposite divided by hypotenuse. Opposite हमारे पास 30 है, divided by hypotenuse हमारे पास 46 है. अगर आप साइन इनवर्स 30 divided by 46 करोगे, you'll get x is equals to 40.7, which can be rounded off to 41. So yeah, that again supports our claim that the angle will be between 39 to 42. State what is meant by velocity. तो आप खुद ही सोचिए what is meant by velocity. It is the rate of change of displacement, or you can write displacement divided by time, or you can write displacement per unit time. They all mean the same. आगे, another toy helicopter flies directly from A to D. So it is covering a distance of 46 meters from A to D in 40 seconds. तो उसका डिस्टेंस कितना है 46 meters and it is covering it in 40 seconds. Explain why the magnitude of velocity for this helicopter is smaller than the answer of A2. A2 का हमारे पास है 2.125 meters per second. अगर हम इसका निकालें, so that will be distance divided by time, which is 46 divided by time, which is 40, which will give us an answer of 1.125 or 1.15 meters per second. 1.15 meters per second हमारे पास ये आंसर आ गया. That is because the distance is greater than the displacement. समझ आ गई? Distance is greater than the displacement. Our distance is 86 meters while our displacement is 46 meters. समझ आ गई? तो 46 और ये है 85, सॉरी 85. तो या इट इज स्लोअर. आगे चलती है द मेन क्वेश्चन विच इज 5 marks. कभी देखा 5 marks का क्वेश्चन? सो या लेट्स डू दैट. See, when the toy helicopter hovers at D, its motor fails. And it reaches terminal velocity. Terminal velocity का क्या मतलब होता है? I'll tell you in a minute. Explain in terms of forces and acceleration what happens as the helicopter falls and reaches terminal velocity. So what happens when the helicopter falls and it reaches terminal velocity? So initially when falling, the only force experienced by the helicopter is weight. ठीक है ना?
इनिशियली जब आप हेलीकॉप्टर फेल होगा ना, जो ओनली फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी वेट. एट दैट टाइम acceleration will be equal to g. ठीक है ना. acceleration will be equal to g which is approximately 10 meters per second square. ठीक है ना. तो after that, as the helicopter falls, it accelerates, right. As the helicopter falls, it accelerates and speeds up gradually. अच्छा, यहाँ आपको एक चीज खुद ही डिटरमिन करनी पड़ेगी. जब स्पीड अप होएगा, व्हाट विल द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड बी. क्या वो स्पीड प्रोड्यूस करेगी. द इंक्रीज इन स्पीड विल इंक्रीज द एयर रेजिस्टेंस. आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. आज सोचो आप एक गाड़ी पे जा रहे हो और वो गाड़ी 10 किलोमीटर एन आवर पे चल रही है, और अपना आप हाथ बाहर निकालते हो, राइट. आपके हाथ को बहुत कम एयर रेजिस्टेंस फील होएगी, राइट. लेकिन वही आप सिनेरियो इमेजिन करें कि आप 120 किलोमीटर एन आवर पे जा रहे हो मोटरवे पे और अपना हाथ आप बाहर निकालते हो. अव्वल तो आपके माँ बाप आपको निकालने ही नहीं देते अपना हाथ, या शीशा ही नहीं खोलने देते, बिकॉज द एयर रेजिस्टेंस इज सो हाई. बट इफ यू डू, आपका हाथ पीछे सडनली जाता है, इट्स अ सडन जर्क, और आपका हाथ बहुत मुश्किल से आगे वापस आता है. दैट इज बिकॉज द चेंज इन स्पीड. व्हेन द स्पीड चेंजेस, द एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली टू द चेंज ऑफ स्पीड. अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी. तो या आगे चलते हैं. द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस आंसर. Eventually, eventually what will happen is that the air resistance will become equal to the force caused by weight. अच्छा, जब दो फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट हैपेंस इज दैट देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स. Therefore, no resultant force will be produced. And as we know, when there is no resultant force, no acceleration will be caused. According to the formula, F is equals to ma. If there is no resultant force, there will be no acceleration. अगर आपका ये resultant force zero है, then the acceleration must be zero as well. So yeah, तो आपको मैं एक विजुअल, एक बॉल की डायग्राम दे देता हूँ. इनिशियली जब आपने उस बॉल को ड्रॉप किया, the only force acting upon the ball was the force of the weight which was acting downwards. But as the ball speeds up, आहिस्ता 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 आहिस्ता, the air resistance will become equal to the weight of the ball, and there will be no longer a acceleration or a resultant force. That does not mean that there is no speed of the ball. That just means that the speed has become constant. No acceleration, constant speed. So yeah, I think I explained it pretty well. And if you still have any issues, be sure to comment on this video. So moving on, question 8 हम नहीं करेंगे because manometer is excluded out of the syllabus. So we're just gonna skip that question and move on to question number 9. Table 9.1 shows details for 7 different nuclides. हमें 7 different nuclides दिखे हुए, and we see the radiation emitted by the nuclides is either none, beta, gamma या alpha है. ठीक है ना. And
हाफ लाइफ हमें दी हुई है, तो या डिफरेंट हाफ लाइफ। आगे देख लेते हैं। A1, हाइड्रोजन 2 and 3 आर isotopes of the element hydrogen. Define the term isotope. Being an isotope of an element is like having the same amount of protons. Isotopes have the same amount of protons, but they have a different, एक second, different number of neutrons. So yeah, as simple as that. You don't have to write much more than that. They have the same number of protons and the different number of neutrons. ये क्योंकि 2 मार्क्स के, you have to mention both of the parts. अच्छा आगे. 2. The equation for the decay of phosphorus 32 as it emits a beta particle is. This is phosphorus and then it emits a beta particle and creates the element Q. जो element Q है, it will have a extra proton because whenever a beta particle is emitted, an extra proton is added to the element. ठीक है ना? जब भी emission of beta particle हो रही होती है ना, one neutron becomes into a proton. So yeah, you have to keep that in mind that a neutron becomes a proton. Therefore, there is a reduction in neutrons but a increase in protons. And as we know, okay, again, whether the equation show that Q is another isotope of phosphorus. Q is not the chemical symbol. As we know, okay, whenever the proton number changes, it is no longer an isotope. Because for an element to be an isotope, क्या जरूरी था? क्या दो मेन पॉइंट्स हमें चेक करने थे? के न्यूट्रॉन number changes while proton stay the same, right? हमने देखना था कि न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहा है और प्रोटॉन नंबर सेम हो रहा है, सेम रह रहा है. दैट इज एन आइसोटोप. बट इन दिस केस हम देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है. और हम ये भी लिख सकते हैं आगे, since the atomic number is changing, it is no not a isotope. You can write that. So yeah, simple as that. Let's move on. आगे देखते हैं. B. One of the sources in table 9.1 is used in a medical procedure. So I think we have done this in our topicals जो मैंने रिलीज किए हुए हैं. Topicals की वीडियो रिलीज की हुई है. And in that, if you go through those questions, तो आपको काफी ज्यादा मेडिकल क्वेश्चंस, मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आते हैं रेडियो एक्टिविटी में. And for those, couple things need to be checked out. A couple things need to be checked out to detect unusual bone structures. It is injected into a patient and the radiation emitted is detected outside the body. State which source in table 9.1 is most suitable for this type of medical use. First of all, for a medical procedure, एक medical procedure जब आपके दिमाग में आते हैं, आपका क्या टाइम रेंज आती है दिमाग के अंदर? Like 7-8 hours, at at most 12 hours की जो थेरेपी होती है या मेडिकल कंसल्टेंसी होती है, दैट इज लाइक 12 hours और एट मोस्ट 24 hours. ठीक है ना? तो आपने ये अपने दिमाग में रखना है, सिंस दे हैव गिवन अस टू ऑप्शंस टू लाइक डिटरमिन व्हाट द सोर्स विल बी. हमें सबसे पहले बताया गया कि इट इज डिटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी. सिंस इट इज detected outside the body, the penetrating power must be high for the nuclide. ठीक है ना? penetrating power must be high. आपको लगता है कि बीटा पार्टिकल्स बॉडी को एस्केप कर सकते हैं? नहीं ना? So that leaves us with gamma. So the only one which can escape the body is gamma. ठीक है ना?
तो ये हम लिख लेते हैं, एक तो हमारे पास गैमा आ गया। आगे अगला हमने जो चीज नोटिस की है कि इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर, एंड सिंस इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर द हाफ लाइफ मस्ट नॉट बी वेरी हाई। ठीक है ना? द हाफ लाइफ मस्ट नॉट बी हाई। सो हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए आपके ओपिनियन में? द हाफ लाइफ शुड बी as little as possible. By as little as possible I mean कि जितना टाइम लगेगा उस प्रोसीजर को करने में उतनी सिर्फ हाफ लाइफ होनी चाहिए, राइट? अगर प्रोसीजर 5-6 घंटे का है तो हाफ लाइफ उसकी 72 डेज या 105 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, उसकी हाफ लाइफ कम होनी चाहिए, ताकि बॉडी इतनी रेडिएशन सफर ना कर सके। ठीक है ना? रेडिएशन से सफर ना करे और उसकी जो वो होती है, what do you call it, mutate na kare cells. And another reason for the radiation to be gamma is that the gamma particles are very low in ionizing power. और ionizing क्या करती है? It can mutate our cells, right? It can mutate our cells, and that is why gamma is used for this specific scenario. क्योंकि gamma जो होती है ना, it is very low ionizing. ठीक है ना? इट आयनाइजेस वेरी लो। सो हम इसलिए भी गामा यूज करते हैं, बिकॉज ionizing power of gamma is very low, therefore it will not damage the cells as much, and the half life not must not be that high. So keeping these points in our mind, we can go search for the nuclide. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास गामा आ गया है, ये दो हमारे पास गामा है। ठीक है ना? दो हमारे पास गामा है, एंड नाउ वी हैव टू डिटरमिन फ्रॉम द हाफ लाइफ, ये आइदर इरिडियम है और टेक्नीशियम है, राइट? लेकिन इरिडियम की जो हाफ लाइफ है दैट इज 74 डेज, देयरफॉर द बॉडी विल हैव टू इंड्योर द रेडिएशन फॉर मच लार्जर टाइम। तो हम क्या लेंगे फॉर हाफ लाइफ? इट विल बी 6 आवर्स, विच इज टेक्नीशियम। तो हम टेक्नीशियम 99 लिख लेंगे। टेक्नीशियम, यही है ना? टेक्नीशियम यही है, इट्स ई, सॉरी, टेक्नीशियम 99 हम लिख देंगे सीधा सीधा। And for our two reasons is that the since it is detected outside the body, the penetrating power must be high for the nuclei. Gamma is our, what do you call it, सबसे अच्छी option, and the half life must not be high in a medical pro procedure, so that we don't suffer through cell mutation by the radiation. So you can write that as well. इनको आप condensed form में लिख लेना, like do not like stretch them out. आगे देखते हैं। Radon gas is one natural source of background radiation. ठीक है ना? Some causes of background radiation are man-made. For example, X-rays, blah blah blah. X-rays और न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स पे भी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड रेडिएशन होती है, तो वी कैन ऑल्सो कंसिडर दैट। और एक और चीज होती है, state one natural source of background radiation. One natural source of background radiation can be cosmic rays. Yeah, we can write cosmic rays. As easy as that. State another man-made source of background radiation that can be due to nuclear testing. ठीक है ना? हम कर सकते हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग, वेपन टेस्टिंग जो होती है, जो आप ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, इन ऑर्डर फॉर देम टू लाइक बी ब्रॉट इनटू आवर आर्सेनल, हमें पहले इनको टेस्ट करना पड़ता है। न्यूक्लियर जो आपके बॉम्ब्स होते हैं ना, उनके लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स होती हैं, और जो रेडिएशन होती है दैट डज नॉट स्टे, आई मीन दैट डज नॉट गो लाइक वेरी क्विकली, सो इट स्टेज। लाइक आपने अगर हिरोशिमा और नागासाकी में देखें, अभी तकरीबन 100 साल भी हो जाए, तो द रेडिएशन इज नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून, इट विल स्टे देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है ना? सो या,
Due to nuclear testing, there are man-made sources of background radiation. State one harmful effect of background radiation. अभी भी जो हिरोशिमा और नागासाकी है ना उसमें ना डिफॉल्ट बच्चे पैदा होते हैं, राइट? डिफॉल्ट बच्चे क्यों पैदा होते हैं? बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस कॉज्ड बाय द न्यूक्लियर बॉम्ब. आप अगर देखें ना कभी डॉक्यूमेंट्री कभी देख लें तो अभी भी ना डिफॉल्ट बच्चे, किसी की एक आंख नहीं है, किसी की एक आंख ज्यादा है, किसी के पांच बाजू है. तो या I shouldn't be laughing at that. Sorry. So yeah, very immature thing for me to do. Anyways, so yeah. तो हम कह सकते हैं सेल म्यूटेशन लिख सकते हैं. सेल म्यूटेशन. तो दिस इज वन पॉइंट. आगे देख लेते हैं. डी. फ्यूजन रिएक्शन दैट occurs is this and then this. Complete the equation to show the missing proton and nucleon number. तो अब हम क्या करेंगे? हमने मिसिंग प्रोटॉन निकालना है, मिसिंग न्यूक्लियर नंबर निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मास नंबर इज, पहले 2 है और 3 ऐड हुआ है और यहाँ 4 है. तो एज वी नो 2 प्लस 3 इज 5 एंड यहाँ हमें 4 नजर आ रहा है तो ऊपर 1 होगा और नीचे एज वी नो 1 प्लस प्लस 1 इज 2 तो यहाँ 2 है तो नीचे 0 होगा. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ठीक है ना? डिड्यूस द नेम ऑफ द पार्टिकल एक्स. द पार्टिकल एक्स का हमने निकालना है कि व्हाट इज दैट. इट it is a neutron. Like, I don't think any explanation is needed for that. It is a straight away a neutron. Suggest where the fusion reaction takes place. As we know, fusion reaction only takes place in the sun. Sun में fusion reaction take place करती है. That is why humongous amounts of energy is produced by the sun because it is यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन. और अभी हम भी अर्थ पे भी ट्राई करें न्यूक्लियर फ्यूजन करने का, बट देर वर अटेम्प्ट्स मेड, बट लाइक मोस्ट ऑफ देम आर नॉट प्रिवेलेंट. हमने ज्यादा उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ही गैदर की, हमने खुद प्रैक्टिकलिटी में नहीं इसको लाए. बिकॉज इन ऑर्डर टू डू फ्यूजन वी नीड अ लॉट ऑफ हीट, राइट? और सन के अंदर तकरीबन आई थिंक 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रीच करता है. सो या. 3. Suggest where the fusion reaction takes place. The fusion reaction takes place in the sun. In the sun. So yeah, we've been trying to get it on the earth, but it has not been successful till now. तो आगे हम देख लेते हैं. Compare the properties of alpha particles and beta particles in terms of their ability to penetrate, ionizing effect, deflection and magnetic fields. अच्छा जी. डिफ्लेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ब्ला ब्ला. आगे देखते हैं हम. पहले हम देख लेते हैं पेनिट्रेटिंग थ्रू मटेरियल्स. तो इन द टर्म्स ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है देन द देयर काउंटरपार्ट बीटा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स जो है दैट कैन बी स्टोर्ड बाय अ aluminum sheet while alpha particles can be stored by a paper sheet. Or alpha particles get absorbed by like तकरीबन 5 centimeters of air while beta particles do not. आगे देखते हैं. आगे हमने आयनाइजिंग इफेक्ट बताना है. आयनाइजिंग इन टर्म्स ऑफ आयनाइजिंग इफेक्ट, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं those have less ionizing effects than alpha particles. In terms of ionizing, alpha particles की सबसे ज्यादा ionization होती है like as compared to beta particles and gamma rays. ठीक है ना? So alpha particles की सबसे ज्यादा ionizing effect होती है. अच्छा, deflection and magnetic field. Deflection and magnetic field, they are opposite in direction कह सकते हैं. The direction is opposite in direction है. ठीक है ना? Opposite in direction in a magnetic field. And we can also write कि जो beta particles होते हैं those particles are more affected by the magnetic field. The beta particles deflect more from the magnetic field. For example, again magnetic field होगी, the beta particles will reflect way more than alpha particles. ठीक है ना? ये alpha है and this is beta.
That is because जो alpha particles होते हैं ना, उनका mass जो होता है that is much more than the mass of the beta particles. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि इफ दिस इज अ होज और इसके अंदर से हवा निकल रही है या पानी निकल रहा है और आपने इसके ऊपर एक छोटा पत्थर फेंका है, इट इज गोना डिफ्लेक्ट मोर देन इफ यू हैव थ्रोन अ बिगर रॉक. अगर आप इसने बड़ा पत्थर फेंका है तो बड़ा पत्थर शायद हिले भी ना उस पानी के प्रेशर की वजह से, है ना. तो दैट इज द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अल्फा एंड बीटा के. जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं दैट विल डिफ्लेक्ट लेस since their mass is like a lot more than beta particles, and the beta particles will deflect more because their mass is much less than the alpha particles for the same speed. So yeah, that is our section B, paper 2, 505421, May June 2022. So yeah, thank you for watching. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz and subscribe.